Okay, we're going to start with your IELTS listening part 1 is we studied that an IELTS listening module like it consists of four clear. We talked about it consists of four modules, four sections, I would say. Section 1, Section 2, Section 3, and Section 4. So today we're going to talk about the first section. And the first section is all about IELTS listening. uh, Section 1. We will talk about exam trips, clear tracks, and then we will take some practical examples as well. And we will try to achieve 10 out of 10, inshallah. And it's the easiest clear section where students can understand it quite easily. So, Bismillah ar-Rahman Rahim, be with me. Let's start it. Okay. Uh, am I visible? Okay, so total number of Yes, questions sir. we talked about they are 40 and each part it has 10 questions. So part 1 is we studied earlier, clear, it's everyday social conversation on everyday topic, clear. So it's totally social conversation and it's between two speakers. As I told you, it's a dialogue. Section 1 is dialogue. Why is it dialogue? Because there would be two speakers. And keep in mind that section 1, the first section, it's a dialogue, as I said, but it's telephonic conversation. It's a telephonic conversation and based on how many people? Two people. First of all, it's a dialogue and the conversation is based on social context, everyday social context. So, and then answer clear follows its order. Recording is played only once. Okay. What IELTS, Claire? Please may disturb or अभी when people get online on time, Claire, मुझे बार बार request आ रहे so पूरा मतलब my attention has been diverted. Okay, what IELTS listening part 1 looks like? Typical situations you may have, like for example, you call to any of the restaurants or hotels and you want to book a hotel. Okay. Uh, as I told you earlier, it's entirely on social, based on social conversation. So you asking for transportation information, clear, joining a club or giving personal detail. Or for example, you call to the office of Safi IELTS Studio and you want to get information about IELTS. So what type of information do you think like you may share? So the information you may share, it might be about name, place, date of birth, clear, uh, course duration, about the teacher, about the fee, about the address, clear. So quite basic type of information you may ask, clear, or you may share. So why part 1 looks easy but clear steals marks? Number one, students usually clear think part 1 is easy, so they stop concentrating. Yeah, it is easy, but don't stop your concentration. And small details matter. One digit, one letter, or one plural can change the answer. For example, the answer is singular. And what if you write plural answer? So again, you will get 0 for that. What if the answer is singular and you write plural? Clear? So again, you may get 0 answer for that. There can be few of the things, few of the points. And the second one, fast correction. Speaker, first of all, he says one answer and later on he corrects himself. Later on, he changes clear. For example, you call to the office of Safi IELTS Studio and you want to ask them that when are you going to start your new classes? And the office tells you that we are going to start our new classes coming Monday. And you write down Monday. But later on, they correct themselves. I'm sorry, it's on Wednesday. So now the correct answer is Wednesday, not Monday. But initially, the speaker provided you an answer, and that was Monday. And then there could be some spelling pressure. Wrong spelling can lose the mark on
completion task. So if there is, so when spelling is involved and if you make mistake with the spelling, you will get 0. Now, most of the time students, they ask me this, sir, may I write British spelling or American spelling? Look, spelling is spelling. Either if you write British or American, it doesn't matter. Ka American spelling like or ka British like, khudwalo ki chahiye we. Both are right. But what if the spelling of, for example, favor, Favor, that's American. Favor, that's British. So if you write any of the spellings among them, so both of them are correct. लेकिन अगर इन दोनों में गलत हुआ तो फिर ये जवाब आपका गलत है. So what we can do, first of all, golden rule for part 1, listen carefully to small details but do not answer too early. अच्छा जी, अक्सर बच्चे गलत जवाब क्यों फाइंड आउट कर लेते? दे आर इन रश. वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं अपने जवाब के बारे में. So if a student, Claire, he doesn't listens carefully, he doesn't let the speaker complete his thoughts, and he tries to answer, so he may loses quite easy marks then. So what I want to suggest, the speaker may give one answer, then correct it, repeat it, or spell it out differently. तो ये आपने मुकम्मल जवाब को सुनना है, बिकॉज फाइनल वर्ड्स जो है ये फाइनल वर्ड्स व्हेन, not initial words. जो initial words है वो कभी भी you cannot let it win. Clear? When you listen carefully, you let the speaker complete his idea and then you write to answer, so that can be the right answer. So बिल्कुल शुरू में अगर वो जवाब दे तो that can be a wrong answer. And usually what the speaker, they want to trap you. And how do they trap you? Speakers, they say first of all one thing and then later on they correct. जो जल्दबाज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, they don't listen for the detail, they don't let the speaker complete the answer, वो गलत जवाब मतलब find out कर लेते हैं फिर. So before listening, you can go for 5-step prep. Number 1, read the instructions. Instruction read करे. Then के instruction में क्या है? Count the word limit. What if the words you're asked to write not more than 2 words and you write 3 words? So your answer is 0. What if the answer, Claire, they ask you to write down not more than 1 word and you write, Claire, 2 words? So again, that is incorrect. And what you can do, you can underline keywords. Keywords, that can be your verbs, that can be nouns, adverbs, and adjectives. Always try to underline them. These 4 words are your keywords, because for verb, they can use synonym. For nouns, adjectives, and adverbs, for all of them, they will use synonyms, not the exact word. So then number 4, predict the answer and expect traps and corrections. The 5th one, mentally you are supposed to be ready. अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा, if I tell you कि अगर आप you want to listen, Claire, or listening test आप perform कर रहे, 90% of the answer, you should know about 90% of your answer before the speaker he speaks. How? Let me write it. Suppose the train leaves at dash. So now 90% of the answer should be known to me before I hear the speaker. 10% मैं इसलिए सुनना चाहता हूं कि मैं कंफर्म करूं कि इसका जवाब क्या है. अब मुझे यहां पे 90% मुझे आंसर ऑलरेडी मिल चुका है कि मैंने टाइम क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट टाइम. लेकिन टाइम भी किस चीज का टाइम? सो लीविंग का टाइम, अराइवल का नहीं है. सो व्हाट इफ देयर इज द टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब स्पीकर अब अराइवल का टाइम बोले यहां पे, तो अराइवल का टाइम और लीविंग का टाइम दोनों में फर्क है. सबसे पहले अगर ये कहे कि यूर अराइवल टाइम विल बी 8 AM और 8 PM. अब देखिए ये जो कह रहे हैं अराइवल के बारे में कह रहा है, लीविंग के बारे में नहीं. एंड यू विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. तो अगर ये जवाब 5 o'clock है, एंड व्हाट इफ यू राइट डाउन 8 o'clock, तो 8 o'clock तो अराइवल है, नॉट लीविंग. और मुझे पता है, बिकॉज ऑफ माई प्रोडिक्शन, व्हेन आई प्रोडिक्टेड, व्हेन आई रेड द क्वेश्चन, आई अंडरस्टूड कि इस ब्लैंक में जो जवाब आएगा वो है टाइम. यहां पे जो जवाब आने वाला है, दैट्स ऑल अबाउट टाइम.
मुझे ब्लैंक के बारे में पता है कि यहां पे टाइम आएगा, तो अब ये टाइम मुझे 90% मुझे ऑलरेडी जवाब के बारे में पता है कि मैंने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द टाइम, जस्ट आई वांट टू लिसन दैट रेस्ट ऑफ द 10%, आई जस्ट वांट टू कंफर्म टाइम तो जवाब है लेकिन क्या टाइम है। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल यू दैट प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जितना हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह तो इसमें आगे जाके आप लोग को क्लियर होता जाएगा। Up. Predict the answer type. How we can predict our answers. Your answers in part one, you may expect different types of answers. Number one, your answer can be what? Part one becomes easier when students guess the category first. कि जवाब clear, that's a name. Suppose आपको ये लग रहा है कि मेरे blank में जो blank मिला है part one में, इसमें जो जवाब आ रहा है वो that's a name of a person or name of a place. तो स्ट्रेट अवे आपके माइंड में क्या होगा कि दैट नेम, बिकॉज दोज आर नॉट नेम्स आर लोकल नेम्स नॉट इंग्लिश नेम्स, सो दैट्स व्हाई दे वांट टू स्पेल इट। तो आपने रेडी रहना है कि ये अब नाम बताएगा और मैंने इस नाम को क्या करना है, स्पेल इट आउट करना है। द पर्सन द स्पीकर विल स्पेल इट आउट एंड स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू टाइप इट। या मतलब उसी टाइम हम आपको एक्चुअल टेस्ट में वी प्रोवाइड यू विद अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, यू मे राइट इट, आप लिखे उसे। तो आपको सबसे पहले किस चीज के बारे में प्रोडक्शन होनी चाहिए कि इट कैन बी अ नेम। तो अगर ब्लैंक में नेम है तो आप रेडी रहे कि द स्पीकर विल स्पेल इट आउट फॉर यू। सेकेंड वन, दैट कैन बी अ नंबर। सो नंबर में आप लोगों ने इस चीज को का जिक्र, ये इस चीज का ख्याल रखना है कि सम ऑफ द numbers can be double. Some numbers can be double. For example, 2, 2. Clear? So now it's double. अब एक चीज को आप अपने मर्जी के मुताबिक नहीं रख सकते कि मतलब मेरे ख्याल में ये सिंगल हो सकता है। Our answer is based on what? Our answer is based on the speaker. तो यहां पे ये जीरो को they don't pronounce zero, they say o. Instead of zero, they say o. Like for example, the number, what's your number? Our office number is 0307. Zero, they don't say zero. They will say O3, O7. Clear? They can talk about O. O7, clear? O3, O. So for the zero, they will always pronounce is O. And then you need to understand about time or date. So watch for correction, because most of the time when it's about time, so AM or PM will always already be provided to you on your paper. जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पेपर पे अवेलेबल है डैश पीएम, और अगर आपने यहाँ पे 5 लिख दिया और पीएम भी आंसर पर, क्योंकि पीएम तो ऑलरेडी पेपर पे है, अगर आपने ये भी लिख दिया तो ये गलत जवाब है। So make sure what is already available on your paper, on your question paper, never copy that on your answers. Then you need to understand about place or address. Listen for street, road, avenue or postcode. तो ये आप लोग के मतलब जो टास्क वन है, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते कि मेरे आंसर्स इन चीजों की बुनियाद पे हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ड्यूरिंग लिसनिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड व्हेन यू लिसन। क्लियर? व्हाट टू डू एंड व्हाट टू वी वांट टू गो फॉर व्हाट, कि मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूं कि ऑलवेज स्टे कंट्रोल्ड। क्लियर? स्टे कंट्रोल्ड, नॉट रश्ड। हमारे पास जितने बच्चे हैं एंड इफ दे वांट टू टारगेट 8+ बैंड एंड आइल्स लिसनिंग, सो दे आर दो स्टूडेंट्स, दे आर ट्रेन टू कंट्रोल फर्स्ट, नॉट टू रश। जो रश बच्चे होते हैं वो 5 to 5.5 बैंड में मतलब कंक्लूड कर देते हैं। सो वी नेवर वांट टू गो फॉर दिस वन, बट वी वांट टू गो स्टे फॉरवर्ड टू कंट्रोल, कि जो बोल रहा है, जो स्पीकर बोल रहा है, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। So first of all, do this. Follow the question order. Write quick notes on your paper. Wait for the complete detail. And most of the time, clear students, they don't wait for the complete detail. And that's why they conclude with the low band. This is something सबसे पहले आप लोगों ने entire listening में जिस चीज पे ज्यादा मैं यहाँ पे I will focus more on that wait for the complete detail. सिर्फ वर्ड्स सुनने से आपका जवाब नहीं मिल रहा है, वेट फॉर द कंप्लीट डिटेल। लिसन फॉर रिपीटिशन एंड चेकिंग। क्या एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, क्या वो दोबारा चेकिंग तो नहीं कि मतलब दे रिपीट एंड दे करेक्ट देमसेल्फ। अवॉइड दिस, डू नॉट गेस आफ्टर वर्ड वन वर्ड। अक्सर मतलब एक वर्ड आपको कह देता है ना, आप उसी की बुनियाद पे अपने आंसर क्या कर रहे, प्रेडिक्ट कर रहे। नेवर डू दैट। डू नॉट पैनिक आफ्टर वन मिस्ड आंसर। कभी कभार ऐसे होता है कि
for example, student, they miss one or two answers and then they start panicking और कंप्लीट जितने भी इनका मतलब लिसनिंग टेस्ट है वो फिर ये गलत चला जाता है. सो डू नॉट इग्नोर दीज वर्ड्स. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. क्लियर? सॉरी, एक्चुअली, नो, लेट मी करेक्ट. ये अल्फाज आपको पार्ट 1 में काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा. एंड इफ यू हैव दीज वर्ड्स इन पार्ट 1, तो इसका मतलब ये है कि इन अल्फाज के बाद आफ्टर दीज वर्ड्स आई विल फाइंड माई आंसर. डू नॉट फॉरगेट द वर्ड लिमिट. अक्सर बच्चे वर्ड लिमिट को फॉरगेट कर ले, सो मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट दैट. ओके, आफ्टर लिसनिंग, मतलब लिसनिंग के बाद आपने क्या करना है? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज 4 रूल्स. Number 1, spelling. Because wrong spelling means 0 marks. Then plural, singular and plural. जब आप singular है, if you write plural, 0. जब आप plural है, आपने singular लिख दिया, 0. Then does the answer fit sentence? ग्रामर फिट को आप चेक करें कि मतलब ग्रामेटिकली भी जो जिस जुमले में आपने कोई वर्ड लिखा है तो ग्रामेटिकली फिट आ भी रहा है कि नहीं. एंड देन वर्ड लिमिट, कि वर्ड लिमिट को आप लोगों ने देखना है कि डिड यू राइट टू मेनी वर्ड्स. For example, you are asked for 2 words and you write 3 words, so that's totally wrong. So make sure you understand the word limit as well. Okay, examiner trap signals. These are the trap signals. Number 1, sorry, actually. Whenever they say actually, so be careful that yes, now you need to be alert. No, wait, let me check. Rather, there was old information. Clear? So these expressions often introduce a correction, replacement, or the real final answer. These are the words, if you listen to them, clear? So make sure that the final answer will come after these words. Whatever the speaker he said earlier, clear? So that's not the right answer then. Okay, number traps में हमारे पास क्या है? The way I told you, 3 or 30 and 13, 15 versus 50, इन अल्फाज के इसमें डिफरेंशिएट करे कि मतलब फर्क क्या आ रहा है इसमें. Students hear one digit and stop listening. No, never stop listening. Let the speaker complete the idea and then decide what can be the right answer. The second number may be the real one. Stress and speed make similar numbers dangerous. तो पैनिक नहीं होना आपने. Make sure that you understand. Sound is not clear? Hello? Clear, sir. It's all right, sir. It's okay. I don't know, most of the students, they message कि sound is not clear. Okay. Fast tip, write the number only, listen to the end, check if it was corrected. So spelling traps, usually what you will have over here, that can be names. Expect the speaker to spell unusual names letter by letter. And street names, they will spell it out. Postcodes, they will spell it out. Similar sounds, be careful with that. B and P, M and N, F and S, E and A can confuse students. And then time and dates and prices. Times, watch for quarter to, half past, from to. And dates, they would listen for the day, month, number carefully. And then there would be prices. So make sure sometimes they give what? When it's about a number. तो जब भी आप नंबर सुने, ये हमेशा जहन में रखें कि they won't give you one single number. The speaker is going to use 2 or 3 numbers, not one number. For example, अब जब नंबर के बारे में बात हो रही हो, suppose there is a price of anything, clear? Price of my mobile phone, for example. So what's the price? So they will give you clear price of mobile phone, write it down. They won't say one number. They will say 2 or 3 numbers. Suppose, first of all, when I talked to the shopkeeper, so it cost me, the price, he told me clear, it was, for example, 10,000. But later on, when I negotiated clear, so finally I purchased 8,500. तो आप 2-3 numbers ये बताएंगे. There won't be a single number. You may find out clear, you will hear 2 or 3 numbers, not a single number. तो make sure कि जो numbers ये बता रहा है,
द नंबर्स दे वांट टू गिव यू, क्लियर? कि जो आखिरी नंबर है, जो सही नंबर है, वो आपने लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करें, नंबर सिर्फ 10,000 उसने सुन लिया और 10,000 राइट ही राइट्स इट। तो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर द राइट आंसर। अब हमारे पास यहां पे क्या है कि यू विल हैव आइदर फॉर्म कंप्लीशन और नोट्स और टेबल। सो इसमें फॉर्म कंप्लीशन में पर्सनल डिटेल्स हुआ करते हैं, फोन नंबर, एड्रेसेस, मेंबरशिप एंड बुकिंग इंफॉर्मेशन। नोट एंड टेबल में टाइम एंड प्राइसेस के बारे में होता है। Clear? So you can expect three types of questions in your part 1. That's form completion. So form completion में ये type question है and note and table में ये. So let's start taking like practically हम ये अब पढ़ना चाहते हैं. First of all, read the question. This is my question. Complete the form. Phone number. This is what, like, the ardue clue. I used to be, clear? It used to be. So it used to be. अब यहां पे देखिए, can you see past? So that cannot. It used to be 589432. But जब भी बट आए ना, बट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब बट आ जाए तो पिछला जो भी वर्ड होगा वो कंप्लीटली क्या है, दैट्स कैंसल नाउ। हमेशा बट को एहतियात से आप लोगों ने सुनना है। बट इट वॉज चेंज्ड लास्ट मंथ। द न्यू नंबर इज 589342। अब जो सही जवाब है वो मेरा, ही सेड आफ्टर द फर्स्ट इनकरेक्ट वन। So the answer is this. The first one is a distractor. Make sure you understand this. For example, if there is any of the names, and complete the second name. And if he says that's Jarrett, and answer is this one. Write what is spelled, not what you expected. जो वो बोल रहे हैं अपने वो लिखना है, अपने तरफ से आप नहीं लिख सकते। For example, express train leaves at, and he wants to say it used to leave at 8:45। अब देख रहे used to, but, तो जब भी ये but बोले, whenever he says but, तो पिछला वाला जो जवाब है वो क्या हुआ, that's totally wrong। But now the express train goes at 8:55। So the correct answer is not 8:45, the correct answer is 8:55। For example, car fare। अब यहां पे देखिए, दो दो नंबर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि मतलब यू वॉन्ट हेयर ओनली अ सिंगल नंबर, बट यू मे हेयर डबल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, कार्ड फेयर, इट्स 1.80 इफ यू पे कैश बट विद अ कार्ड। अब देखिए यहां पे कितना मतलब हाउ दे ट्रैप यू। इसने कहा कि इट कॉस्ट यू 1.80 कैश इफ यू पे कैश, लेकिन यहां पे मुझसे जो मांगा जा रहा है वो कार्ड के बारे में, कैश के बारे में नहीं है। तो व्हाट इफ यू जस्ट ओनली हेयर इट कॉस्ट यू 1.80, और आपने 1.80 बस जैसे सुन लिया और इन यू हैव रिटन 1.80 हेयर, सो दैट्स रॉन्ग। बट विद अ कार्ड इट्स ओनली 150। सो द करेक्ट आंसर कैन बी 150, नॉट 1.80। अब नियर स्टेशन इज डे स्ट्रीट। अब मुझे पता चल रहा है कि स्ट्रीट का नाम मैंने फाइंड करना है, क्योंकि दिस द वर्ड इट मैचेस हेयर विद स्ट्रीट का नाम। सो द बस गोज थ्रू किंग स्ट्रीट फर्स्ट, बट द नियरेस्ट स्टेशन इज सेंट्रल स्ट्रीट। अब ये यहां पे अपने स्ट्रीट का नाम किंग स्ट्रीट तो सुन लिया, लेकिन पहले से गुजरेगा और फिर जो हमारे पास नियरेस्ट है, बिकॉज दे आस्क्ड फॉर व्हाट, nearest station. So the nearest station is on Central Street. So we can write Central. So these are the distractors. They will distract your mind only. The appointment is on. We first thought. अच्छा, जब भी ये words आ जाए ना, these are all distractors. First thought. First thought, Tuesday would work, but Thursday is the final booking day. So the correct answer is this one. Okay, how to. Hello. Okay. Yes, sir. Yes, अभी टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स दोबारा से हमने मतलब लॉग इन करना है, ठीक है? all right.